Hello everyone. This video is specifically related to the new latest judgment which is delivered by Honorable Supreme Court on 4th of November in the case of Rajnesh versus Neha. This is one of the landmark judgment for family law wherein the court has decided on certain important grounds related to maintenance in cases of divorce or in the cases where the woman has to suffer the dependent women, dependent children, dependent parents have to suffer due to the strategy, uh, due to any relevant, due to the breakdown of this matrimonial wedlock. So herein, in this case, the Supreme Court has used its powers and have laid down and issued certain guidelines in five different prospects. The first being issue of overlapping jurisdiction. Now, under Hindu law, we have seen that the order of maintenance is provided under different legislations. That is Hindu Adoption and Maintenance Act. You have a provision. Then you have a provision in CRPC also. You have a provision in Domestic Violence Act also. So this might overlap in terms of jurisdiction. ये हो सकता है कि किसी एक वुमेन को यदि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मेंटेनेंस ग्रांट हो चुका है तो वो सीआरपीसी के अंदर भी उसे क्लेम कर सकती है बिकॉज इट इज नॉट बार्ड एंड दिस हैज बीन डिसाइडेड इन अ सीरीज ऑफ जजमेंट. सो कोर्ट इन दिस केस हैज ट्राइड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन सो दैट दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट सेम लेवल और सेम इक्विटी के साथ प्रोटेक्ट किया जा सके. Then the court has also laid certain guidelines with respect to payment of interim maintenance. Interim maintenance वो maintenance होता है जो आप फाइनल डिग्री के डिसाइड होने के पहले एज अ रिलीफ ग्रांट करते हो प्लेंटिफ को या फिर पिटिशनर को. Then the court has also laid down specific certain criteria which will be considered for determining the quantum of maintenance. मतलब कितना मेंटेनेंस कोर्ट को ऑर्डर करना है इसे देखने के लिए कोर्ट ने स्पेसिफिक क्राइटेरियाज लेट डाउन किए हैं. Then we have date from which the maintenance to be awarded. This is a general lacuna, you can say, or a general problem which the courts have faced round the corner where they have seen कि maintenance from the date of application allot होना चाहिए या फिर from the date of order allot होना चाहिए या फिर from the date on which the person is entitled to come into the court and stand before the court. So this has been a general problem which have been observed by court in different cases at the level of family courts or even high courts. So in this case, court has tried to lay down certain specific guidelines as to answer these specific questions. And the last question is enforcement of orders of maintenance. मेंटेनेंस की ऑर्डर को सीरियसली यदि नहीं इन्फोर्स किया जाता है तो वो इम्पैक्ट कर सकता है डिपेंडेंट वाइफ की लाइफ पे या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन की लाइफ पे या फिर फॉर दैट मैटर डिपेंडेंट पेरेंट्स की लाइफ पे भी, क्योंकि मेंटेनेंस इज ओनली वन सोर्स फॉर ऑल दीज थ्री कैटेगरी ऑफ पीपल टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंगली where they was living before the dissolution of this wedlock. So the court has also specifically laid down the stringent enforcement of the orders of maintenance, and the court has also laid down penalties. I will try to cover this judgment and highlighting the important points herein. So the facts are pretty simple. The court in this case, as I told you, have tried to frame certain guidelines using their power so that there is a uniformity in the cases involving the question of grant of maintenance as well as grant of interim maintenance specifically. Now, this judgment is considering all the provisions wherein there is a scope of grant of maintenance to a deserted wife or parents or children. Specifically, it has covered section 129 of CRPC, which talks about grant of maintenance to three category of people, that is the deserted wife, the parents, and the minor children. It has been observed by the court that the cases are pending and which has created a problem for all these people. So in this judgment, the court has also laid down specific criteria. I will be dealing with the criteria specifically. First, जिस चीज पे गाइडलाइन कोर्ट ने इशू करी है वो ये इशू करी है, कोर्ट ने ये कहा है कि मेंटेनेंस जो है वो सोशल जस्टिस का एक पार्ट है
एंड वो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर स्टेट के पास पावर है कि वो वुमेन और चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी गाइडलाइंस को फ्रेम किया जा सकता है, और इसी पावर के अंदर कोर्ट ये गाइडलाइंस फ्रेम करता है। सबसे पहली बात है इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन। कोर्ट ने इस केस में ये कहा है कि बहुत सारे स्टैट्यूट, जैसे मैंने आपको बताया हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, सीआरपीसी, सबके अंदर देयर इज अ जुरिसडिक्शन टू फॉर द ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस. So court in this case has specifically laid down that on the issue of overlapping jurisdiction, first I'll discuss all the provisions specifically. So first, Hindu Adoption and Maintenance Act के अंदर you have section 24 wherein you can ask for maintenance. Then under Special Marriage Act you have section 36 which makes a wife entitled to claim pendulite maintenance. Then you have section 25 and 24 I discussed already. Then under this special legislation which was enacted specifically for the grant of maintenance amongst Hindus, then in this special legislation there are certain criteria on which the wife can be granted maintenance. One important point to note here is that under Hindu Adoption and Maintenance Act only a Hindu wife is entitled for maintenance. No other category of people are entitled to maintenance under Hindu Adoption and Maintenance Act. Now section 125 CRPC also talks about maintenance. This provision is elaborative provision in terms of maintenance. It covers almost all categories which are related to a man, and the husband in a wedlock has the responsibility to maintain all these categories under section 125. There are two conditions specifically under section 125 which have to be satisfied for the maintainability of section 125 CRPC application. First, the husband has sufficient means and neglects to maintain his wife, and then the wife should be unable to maintain herself. मतलब उसके पास खुद के पास ये कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए कि वो खुद को मेंटेन कर पाएगी, उसके बाद ही हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि सेक्शन 125 के अंदर उसको एक ऑर्डर पास होना चाहिए. Next important legislation is the order of maintenance is also given under the Domestic Violence Act 2005, wherein the aggrieved woman who is subject to domestic violence, she is covered under the aggrieved person definition, and she was subjected to domestic violence, has a right to claim maintenance as well as a right to claim home, a right to claim residence under the act. So these are different acts wherein the question of overlapping jurisdiction arises. Now what is important with respect of this judgment is that in this judgment the court has tried to rectify the overlapping jurisdiction problem. That is, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत ज्यादा पिटिशनर्स ऐसे होते हैं जो इन सारे एक्ट्स के अंदर अपनी रेमेडी को क्लेम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स में क्योंकि बहुत सारे केसेस में एट हाई कोर्ट लेवल और एट सुप्रीम कोर्ट लेवल आल्सो इट हैज बीन हेल्ड दैट हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट का जो रेमेडी है वो सेक्शन 125 सीआरपीसी की रेमेडी से काफी इंडिपेंडेंट और डिफरेंट रेमेडी है, एंड दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम वेयरइन एक सिंगल पार्टी दोनों जगह दो एक्ट्स के अंदर रेमेडी को क्लेम कर लेती है. So this has been rectified under this particular case. The court has held that the amount of remedy that is claimed in one provision or one legislation will be set off to the amount awarded under other legislation. इसको समझने का बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि यदि आपको सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर ऑर्डर मिला है टू हैव अ रेमेडी और एलिमिनी ऑफ 1 लाख रुपीज अ ईयर, और आपने क्लेम किया था हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर भी, और आपको वहां पे रेमेडी मिल जाता है 50,000 रुपीज का, तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड को 1,50,000 का रेमेडी पे करना पड़ेगा. नहीं, हस्बैंड को सिर्फ जो रेमेडी हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट के अंदर आपको लेटर स्टेज पे ग्रांट हुआ है वो सेट ऑफ कर देगा पहली रेमेडी में, मतलब 1 लाख रुपीज माइनस 50,000. So now the husband has to pay an extra amount or not an amount of rupees 50,000. Set off का मतलब है कि वो balance हो जाएगा with the remedy you have been granted by court at the first stage. Next important point is यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है
कि कोर्ट आपको बार कर रहा है आपकी रेमेडी को क्लेम करने के लिए इन डिफरेंट एक्ट्स. No, the court is not at all barring you to claim this remedy. The court has only laid down the clause of set off क्योंकि it is against the interest of the person who is paying the maintenance to pay it under different sections or different acts. The second question wherein the court has decided is the question of interim maintenance. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कोर्ट ने इस केस में हाईलाइट करी वो ये है कि इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब का जो प्रोस्पेक्टिव है, जो रीजन है वो ये है कि वाइफ को जल्दी रेमेडी मिले, उसको वेट ना करना पड़े फाइनल रेमेडी तक. और यही पर्पस यहाँ पर डिसॉल्व हो रहा है क्योंकि इंटरिम मेंटेनेंस की जो पिटिशंस है वो बहुत टाइम तक पेंडिंग रह जाती है. तो कोर्ट ने इस केस के अंदर ये हेल्प किया है कि इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो डिपेंडेंट वाइफ है, डिपेंडेंट पेरेंट्स है या वो है who has no source of income, it is not legally valid or legally right to keep her interest on hold just because the case is pending. So the court has said that within a time frame of 60 days, the question of interim maintenance has to be decided in the present matter, in the matter involving the question of interim maintenance. Now, in this particular case, I'll come to the final guidelines in specific sections and I'll try to explain it from there. The first issue I have already explained, that in case of overlapping jurisdiction, the court is not barring either of the remedies for the claimant. The court has only laid down that the parties have to mandatorily disclose the previous proceedings and the orders in the subsequent proceeding. मतलब यदि आपने सीआरपीसी के अंदर कोई ऑर्डर ले लिया है और आप फिर हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट के अंदर आ रहे हो, तो ये आपका ड्यूटी बनता है, ये पार्टी का ड्यूटी बनता है कि वो 125 के ऑर्डर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगी इन द लेटर सूट फाइल्ड अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. तो इट हैज टू डिस्क्लोज कि उस ऑर्डर में कितना मेंटेनेंस मिला है ताकि जो मेंटेनेंस का क्लेम है वो सेट ऑफ किया जा सके. Now, the court has also given liberty to the later court deciding that if it wants to make any amendment or variation or modification in the first proceeding, it has a right to make the same. And it can make, मतलब यदि उसको लगता है कि 125 CRPC के अंदर excessive maintenance दे दिया गया है, तो जो later stage का कोर्ट है, जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की उसको रेमेडी को डिसाइड कर रहा है, वो वेरिएशन और मॉडिफिकेशन दोनों चीजें कर सकता है. नेक्स्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड कैसे होगा, उसके लिए एक एफिडेविट कोर्ट ने यूनिफॉर्मली एनेक्सर 1 की तरह एनक्लोज किया है, 1, 2 और 3 की तरह इस जजमेंट में, जो हर पार्टी को दैट इज द वाइफ, द डिपेंडेंट्स हु आर क्लेमिंग मेंटेनेंस एज वेल एज द हस्बैंड हु इज लायबल टू पे द मेंटेनेंस, दोनों पार्टीज को अपने असेट्स, लाइबिलिटीज, सब चीजों के बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी है इन द फॉर्म ऑफ दैट एनक्लोज्ड एनेक्सर एंड एफिडेविट. Now, before laying down guidelines in this judgment, there were numerous judgments of High Court wherein सारे हाई कोर्ट्स ने अपना एक फॉर्मेट पब्लिश किया था फॉर दिस एफिडेविट. सो इन दिस जजमेंट द रेलेवेंस ऑफ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस जजमेंट इज दैट सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हैज लेड डाउन अ यूनिफॉर्म format of this affidavit, and every party, and it has bound every party to submit this affidavit because this will act as one of the criteria in determining the quantum of maintenance. Third question, the affidavit which shall be taken into account will act as an important factor. Now, what are the factors will be considered by court? The factors are age of the parties, कि ऐसा कोर्ट ने जजमेंट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि यदि कोई वाइफ है हु इज वेल एजुकेटेड बट देन आल्सो आफ्टर मैरिज उसने अपना करियर रिनाउंस कर दिया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ हर ओन फैमिली और फॉर रेजिंग हर किड्स, so it is difficult for the wife in the age of 30s or 40s and in a later stage to again enter that career. So mere education qualifications cannot form a sole criteria of not allowing or not granting maintenance to that wife. Even if she is educated, even if she is earning, this will not act as a bar in all the maintenance proceedings. Matlab, if the wife is working, this will not act as an important factor and this will not bar the remedy of claiming maintenance.
सिंपल सा लॉजिक है मेंटेनेंस के पीछे जो कोर्ट ने इस केस के अंदर स्पेशली हाईलाइट करा है. कोर्ट ने ये कहा है कि मेंटेनेंस देने के पीछे का मेन मोटिव ये है कि जो मैट्रिमोनियल होम में वाइफ को मिल रहा था वो सब उसे आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ दिस वेडलॉक भी मिले. So that is why court has held that age of the parties will be considered while determining the maintenance, the quantum of maintenance, the employment status of the parties will be considered while determining the maintenance, the assets and liabilities the parties hold will play an important factor in determining the quantum of maintenance. Now in this judgment, the court has also laid down that these all factors are important to be considered because the quantum of maintenance will also depend on the paying capacity of the husband. तो हस्बैंड के एसेट्स और लाइबिलिटीज के डिस्क्लोजर के बाद कोर्ट के लिए डिसाइड करना इजी होगा कि वो किस लेवल का, किस क्वांटम का मेंटेनेंस अफोर्ड कर सकता है, ताकि ये रियलिस्टिक सेंस में ऑर्डर्स ऑफ मेंटेनेंस का एनफोर्समेंट हो सके. The next question was date from which the maintenance to be awarded. Now, different legislations have had different stands on it. The court has clarified in the judgment that the maintenance will be awarded from the date of filing of maintenance, not from the order of the maintenance. So, for example, if wife ने आज application file करा है for the grant of maintenance, that is on 8th of November 2020, and even if the order comes on 8th of November 2021, then also the payment of maintenance will start from 8th November 2020. That is the day on which the application of maintenance has been filed. For the last question of enforcement, the court has decided that the degree or order of maintenance, order includes the interim order also of maintenance, may be enforced under section 28A of Hindu Marriage Act, section 20 clause 6 of Domestic Violence Act, section 128 of CRTC, and it will be enforced as a, this is important, as a money decree of a civil court as per the provisions of CRTC. These are provisions as stringent provisions for the enforcement of any order or decree, and the same has to be applied in the case of orders and decrees involving the payment of maintenance, because the entire motive behind grant of maintenance is to restore the wife financially in the condition she was having before the dissolution of such wedlock. So the case has been decided by the Supreme Court in order to lay guidelines in these specific areas of jurisdiction under family law. And with respect to examination, this case of Rajnesh versus Neha is having a very important place, because the questions can come from this particular point, especially in the area of family law, because this judgment will act as a precedent for all the disputes arising in respect of maintenance on all these 6 factors. I hope you would have understood the concept and I have tried to decode the concept in simple language for you. So thank you so much.